Good evening, all of you. Let's start. Before I take up your questions, I'll just start with what I see on the charts for the coming week. Uh, can somebody confirm if my screen is visible with two chart display? Yes, sir. Able to Yes, see. visible. Okay. So basically, here if you see, it is sort of reversing from the top. Now, from here there can only be two possibilities. Either if you see like this, then this is start of a fresh reversal from the top, which I think has the most number of chances to happen. So eventually, where I see is Nifty coming down from here all the way somewhere here before again jumping like this. But this is very far away. For the coming week, for this thesis to happen, now let's see monthly also, then we can have a very clear picture. Now if you see this monthly, it's a proper reversal candle. Where is it showing? Yeah. This is a proper reversal candle about to happen. So for this to continue, we'll have to have 1 or 2 more weeks of big red. Now, since everybody last week or last couple of days has turned bearish, this week probably will might have a doji here rather than continuation. And the last week will probably continue to either form a bearish engulfing of this or like slight break of this particular level 24,500. So with that premise, if we go to daily, on the daily time frame, where I see sort of a support is this zone because it was there for in this zone for quite some time, and this is very close to 25,000. So probably if tomorrow we open flat or a little bit gap up, we might eventually come down and test this zone 25,000 or something. That we'll come to know tomorrow. But as of now, this is the nearest support that I can see because the breakout level of this one has already broken. 25,200 was the breakout and it has already broken. Now, if you come down further, this hourly consolidation that you see, it sort of broke that consolidation yesterday at close and then it is hovering around there. Now, what or where it will open on Monday will probably decide the direction. As of now, it is showing 40-45 points up GIF Nifty. So 45 points up is about this zone 180. So if at all Monday it wants to continue its bearing trend, and if Monday continues to be a bearish day, then we will see a big candle like something like this, a candle of this size, like something like this candle. So everybody who is thinking we have already missed a very good day on Friday, Friday was not a good day. Friday was an okay day. Like you can trade, but it's not that kind of a day where you have taken puts and then they have double, tripled or something like that in a day. Those days are yet to come, and probably the next week or the week after that we'll have one such day. Where I see the reason is probably on Monday itself we'll have this big day, like 200-300 points day. That depends on how it behaves the first 15-20 minutes. So our plan should be ideally, this is again my own view, this is not a recommendation since we have started recording videos. I cannot give out trades or recommendations like that to you guys. So where I feel what I feel will happen on Monday is it will open somewhere close to here. It will sort of go up to tell everybody that I am going up and then it will fall aggressively is what I am thinking based on Friday's closing. Now once it will open on Monday, I'll again further update what is going to happen on the chart. Now with that out of the way, let's start with our questions. Anybody who wants to know what is happening in the market, how I trade my levels, any particular questions or doubts that you have? Because I saw one question from uh, Pradi Ras madam, but she is not live. So apart from that, anybody else, if somebody of you have any questions, we can start from there.
before somebody comes up, let's see the option chain also. Even the option chain is completely stacked in calls, and the nearest support is 25,000, which is also supported by charts. So if at all we try to go down on Monday, we will have to test 25,000. सर यू सेड कि आज स्कैल्प करना है या होल्ड करना है, वो हाउ यू डिसाइड सर? So the same thing, like my prediction saying there will be a big candle on Monday, because Monday being a fresh week candle, and that too now it is confirmed. If you see on daily or weekly, it is the reversal is confirmed because of this week's close. So if it has to continue aggressively, Monday is the chance where it can straight away go and test 25,000 first, or 24. If 25,000 is broken, then 24,800. Reversals never happen with small candles. The reversals will always happen with big candles. So far, what has happened on weekly are two small candles. So if it wants to continue its reversal trend downwards, this is the chance. Previously also, if you see, we are at a zone of something like this particular pattern. If you see, we were on an uptrend, two small weekly red and then the big weekly red. I think we'll also have the same pattern this time also. So Monday, if at all it goes according to how we plan, it might be a day where you buy it on in the morning and then hold it throughout the entire day, where put options will like double or triple. That again, as and when the market opens and the first 15-20 minute candles, I will post it on the group whether the chances of it happening are high or low. We'll Sir, come to know in the first 2-3 candles itself. No need to wait for long time. Yeah, ओके. somebody's. Yeah, Ravi. when we compare with the Bank Nifty, right? Yeah, Bank Nifty is clearly in uptrend. yes. But that again, Bank Nifty is not in an uptrend. Bank Nifty is showing as if it is in an uptrend. I'll show you its daily chart. The uptrend, if an index is in uptrend, it will not hover around the same levels for like 1-2 weeks. Not possible. You see Okay. this? Bank Nifty is forming a rising wedge. Rising wedge. Yeah, yeah. Yeah, and it is almost at the point of breakdown. It has, I Mm. mean, it has been stretched for quite some time. This rising wedge has started forming, let's say this candle. It has started forming from May and it is now in July. Mm. So if at all Nifty starts to fall, Bank Nifty will again outperform in falling also. Because it has outperformed when the Nifty was struggling. Now it will outperform when it is falling also. Okay, sir. So Bank Nifty, I mean, I am waiting for Bank Nifty to join falling. Then we can see good moves on Nifty. And if Bank Nifty starts to fall from here, the first support is on 55,500 and then this breakout level 54,420. Because all these small candles, if you see, whenever this sort of consolidation or this sort of ranges are broken, 2-3 candles itself will cover the entire range. Like in two big candles, it will fall and it will cover the entire up move that it has given so slowly. That is always the trend. Like if you see this zone, it was falling so slowly here. And when it started going up, it covered the entire range in 2-3 points, 2-3 candles only. Yes, sir. So the same thing will happen here also. Since it is going up so slowly, whenever it will fall in 2-3 candles finish. Mm. Okay. So Radhi ma'am asked us a question like, how did I find out that 320 level yesterday? So it was basically this particular zone, like whenever it broke out on 26th of June, I think, like expiry day break, it happened from that particular level only, 320. So previously, if you see, there was this candle high at 300, and then again this bunch of candles which took support at 320, 300, 320. So that is why we found the range that it might reverse from 300 or 320.
Nothing big in that actually. Sir, you don't do option selling in this one, sir, stocks. No, no. The stocks, I mean, it's too hard to keep track of them because when they move very wildly. Index though doesn't move that wildly. Stocks, Okay. if at all we want to earn, it's always better to buy because anyway the stocks being monthly expiries, they don't decay for the first 2 weeks for sure. Decay only starts at the end. So if at all you feel the stock is going to move, buy those options in the first 2 weeks of any month. You will have very little decay. No, no, I'm talking about option selling, sir, in stocks. Yeah, basically you are doing option selling because you want some movement to be captured, right? Or you are Mhm. doing non-directional option selling. Ravi? Yes, sir, I agree. No, no. I I was do asking whether you option wanted selling. to. You are going to No, do no, I option do, sir. selling I for do option non-directional. selling. For No, I do non-directional. option selling directional only, sir. Not I don't understand non-directional. I don't understand hedging. That is what. That So is. when we are doing for directional in stocks, and if you are doing it for the first 2 weeks of a month, it is always better to do buying. And if you are going to do it in the last 2 weeks of a month, if it is always better to do it in selling. Kamru. Okay. Anybody else? If somebody wants to ask something. Uh, yes, yes, sir. Yeah. Uh, Actually, how do you see that FIs are adding their So if you see this, position? you are able to see my screen, right? So this option chain. Yeah, can you make it is in one screen, sir? You are sharing two screens. This one. Now are you okay? Are you able to see? Oh, yeah, okay. So here, if you go into the sensible thing and under this analyze tab, if you select FII DII data, you will get this sort of an table. In this table, if you see FII under index options, on Friday they sold calls and they bought puts. That means clearly bearish. And if you see overall, they are holding only 8,685 lots of calls alongside, like they have not shorted. But they are holding 1.75 lakh puts, lots of puts. So 20 times more than the calls that they have. So they are clearly bearish. No questions asked. And the other two prop desks, they have also sold calls and bought puts. But we retailers, we have bought calls and sold puts. We always do reverse, right? So this itself is saying Monday also will definitely have a bearish movement. And the chart is also supporting. And if you see futures today, like on Friday, FIA sold 3,500 crores of futures. It's a big figure. In cash, they have sold 5,100 crore. After such a long time, they have sold a big amount. Mm. Sir, just one small doubt here. You Yeah. told they have brought puts. They have brought puts. They have means they have done put writing or they have bought No, no, they puts. have bought good. Since last October, when the SEBI has brought in this new margin rules and all, FIA stopped writing. Now all the writing is done by big retailers. No, I So still I have not understood, sir. They have done option buying of puts. That's what you are telling. yes, That means then market should go up, no, sir. no, they bought puts. Why will market go up? I thought big players will do option selling. That's why I asked, sir. I mean, since this SEBI's rule last October, FIS particularly stopped writing. They have started buying options. Oh, okay, got it, sir. So FII are now 1.75 lakh lots put long. So now only retailers are writing, nobody else. So you can only change. So if you see, as retailers, we have written almost 4 lakh lots of puts. Like we have sold That's 4 what. lakh puts. That's what. That's too big an amount.
I mean, it's very easy to butcher now. But what we don't understand on this particular chart is which expiries have we written? Like if you, Mm. although it is showing we retailers have written 4 lakh lots of foods, but if you see it in the option chain for this particular expiry on 17 July, there is hardly any volume. Mm. So which expiries have we written? That is not shown. So if we change that next expiry, we can check here. Yeah, you can check now. See, 24. No, but then the figures are not that comparable. I mean, the figures are not straight additions because those three categories that they have shown in the index options chart, which are FIA, props, and retailers, there are two or three other categories also which are missed. So the last one monthly expiry on 31st July, 25,000. So if at all 25,000 we are able to take out this level, then it will fall very badly because all the expiries 25,000 is written very aggressively. 25,000 put. So that is the last chance for bulls to push it up. If 25,000 is not defended, I think gone. सर ये Okay. डाटा में आई मिस्ड ऑल दिस ये डाटा का कौन से आपके जीरोधा साइट पे दिखा है ये एफआई करो This is that sensible. If you are having an account in Zerodha, you can very well log into Sensible free. It's an नहीं add-on जीरोधा that you get. ओके नहीं नहीं सेंसिबल अभी एंजल पे ने बंद कर दिया फ्री देते थे अभी मेरे Okay. पास तो फायर बजाज ऑटो मोतीलाल ओसवाल एक और second. एंजल वन का है तो एक second. फायर्स में मिलता है क्या सर I think yes, they are tied up with many things. एक second देख लेता ना. It is tied up with Zerodha, Angel One, Upstocks and ICICI Direct. ये चारों में आपको फ्री मिलेगा. ये एफआई का आप जस्ट एक एक बार रिपीट कर ये जस्ट दिखता है सर कैसे दिखता है Okay. So what I was saying was, if you go to this Analyze tab and select this FII data, हाँ you हाँ will you will get which party has done what the last particular trading day and overall. Like if you see this last column which says change, it यस refers to only the activity done by each and every player the last trading day. Like in this case, it is on Friday. So on Friday, FII is here. They sold 36,000 calls and they bought 18,000 puts on Friday. But यस overall, if you see their entire positions of all the expiries combined, they are they have bought 8,600 lots of calls and about 1.75 lakhs of lots of put. यस So they are heavily put loaded. That means they सर are planning to sell more. सर फिर ये कंफ्यूज हो जाएगा ना जिधर अपन राइट जो ओपन इंटरेस्ट है वी सी दैट कि इट इज ऑल राइटर्स वैसा नहीं है फिर अभी No, no, sir. Last like 18, last from October, November, all that has changed. नहीं व्हाट ओपन इंटरेस्ट का अपन जो अभी चार्ट इधर मीन्स ये डाटा देख रहे हैं Hmm, कौन से भी ब्रोकर के यहाँ जो 25,000 के पुट पे समझो 4 lakhs का ओपन इंटरेस्ट है hmm. तो यू कैनॉट से कि दे आर ऑल राइटर्स राइट No, sir. Whatever you see here in the option chain chart, that is the combined contract value. It's not like writers or buyers. Like if I sold something and if you bought something, then यस only यस 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 one lot will कंबाइंड है come on लेकिन सर तो लेकिन व्हाट वी इंटरप्रेट के ये सब Ah, मैक्सिमम राइटर्स है yes, इस पे yes. Conventionally, what how we interpret is all the OI which is available visible on the option chain is held by the sellers. Because conventionally, what we are made to understand is they have the longest holding position and they are the ones who manipulate the market. So we see as if it is writing only. We don't see it in terms of buying. लेकिन अभी जो आप बोल रहे हैं तो फिर उसमें कंफ्यूजन हो रहा है Ah, बायर्स भी है बोल रहे yes. हैं So that is why, sir, we need now. It's not like the previous time where you just see this chart and say there are writers here, and if it is increasing in call side, it is sure that it will not go to call. But here it can be other way also. Like if the call OI is increasing and market is let's say sideways, then there is a high chance of market breaking up because FIS have started buying calls instead of writing. हाँ
So we need to corroborate what the chart is telling with option chain. We cannot take cues directly from option chain. Previously, you can look at option chain and directly say the market is going to go this way. Now it is not the case. Now you'll have to first see the chart, and then if at all option chain is assisting in that, then you can continue. Okay. Okay. Thank you. गुड इवनिंग सर। Hi, Manchu bhai, good evening. सर अभी क्या ख्याल है आपका? फिर अभी अगर ये फिर से अभी वीकली एक्सपायरी को चेंज करके फोर्टनाइट कर देते हैं तो इनका क्या भरोसा है? अभी पहले बोले हैं साले कि अभी कोई चेंज नहीं होगा, फिर तो मुझे लगता है ये मार्केट बेकार ही है ट्रेड करना। नहीं, fortnightly अगर हो जाता है, I mean, if at all they decide to bring in this fortnightly option, then I would say no point in selling anymore. Just go to buy. Market will move I mean, in spite of whether it is fortnightly or monthly or whatever it is, market will move. See, options came into our market somewhere in 2005, 6, and when they came, it was all monthly only. And if you see 2005, 6, 7, they were all very wild years. So it is not that if you remove weekly expiries, the market will not move. It will move, but selling will not be lucrative anymore. इफ एट ऑल बिग प्लेयर्स डिसाइड टू देन सेल तो मार्केट साइडवेज रहेगा बहुत दिनों तक, क्योंकि उन्होंने अगर सेल मारा है एंड सो दे वोंट लेट द मार्केट मूव. तो फिर सर क्या सोच रहे हो? अभी आप कह रहे थे क्रिप्टो के बारे में सोच रहे हो, वो कैसे होगा? हाँ, तो राइट नाउ एज ऑफ नेक्स्ट मंथ आई मोस्ट ऑफ माय फोकस विल बी ऑन बिटकॉइन ओनली, आई थिंक. हाँ, अभी कितना बढ़िया मूव कर रहा है। हाँ, एग्जैक्टली. तो बिटकॉइन में अगर आप देखोगे तो हर हफ्ते या 2 हफ्ते में तो एक बड़ा मूव देता ही देता है और पकड़ने लायक देता है. इट्स नॉट लाइक इट हैज गिवन अ वेरी स्मॉल मूव. इट गिव्स अ मूव सो बिग, वन सच मूव इज एनफ, पूरा साल का खर्चा निकल जाता है. फिर सर सुबह 6 घंटे इंडियन मार्केट, शाम को ये फिर कैसे मैनेज होगा? नहीं, अगेन इंडियन मार्केट विल डिसाइड बेस्ड ऑन चार्ट्स कि वेदर इट इज गोइंग टू बी गुड और बैड डे. अगर गुड डे रहेगा तो यहाँ पे बैठ के रात को बिटकॉइन कर सकते हैं. इफ एट ऑल वी नो बिफोर हैंड दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड डे इन इंडियन मार्केट, देन देयर इज नो पॉइंट इन वेटिंग फॉर इंडियन मार्केट. नो, विल फोकस ओनली ऑन बिटकॉइन. इंट्राडे ही करोगे सर उसमें या स्विंग करोगे? स्विंग, स्विंग. अच्छा, बिटकॉइन इंट्राडे ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज्यादा है, मार देगा वो. हाँ अभी उस पे भी जीएसटी लगा दिया इन्होंने, 18% है ना? हाँ, तो बहुत ज्यादा है, बहुत. एक लॉट बिटकॉइन अगर आप बाई करके सेल करोगे फ्यूचर्स, द कंबाइंड ब्रोकरेज दैट दे चार्ज इज अबाउट $100 एक बिटकॉइन पे? एक बिटकॉइन पे, विच हाँ। इज वेरी हाई. इधर देखो, एक कैलकुलेटर में है, ट्रेडिंग की कैलकुलेटर. बिटकॉइन लेट्स से बाई प्राइस आपने लिया है 1,18,000 एंड सेल किया है 1,18,100 पे, एंड बोथ साइड यू आर लाइक मेकर एंड टेकर. देखो $97.8 तो ब्रोकरेज है, $97.52. जीएसटी तो इसने अभी लगाया नहीं कि लगा लिया? ये जीएसटी इंक्लूड करके है. अच्छा, So Bitcoin, if at all somebody wants to trade, don't go near scalping or intraday or something like that. Just follow hourly charts of Bitcoin, wait for a swing and target minimum 1,000 points. Otherwise, we're not going to break even. Not possible. बाकी सर पिछले साल का चार्ट देख रहा था मैं, जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे ही होते हैं, उसके बाद ठीक हो गया था। Bitcoin or Nifty? निफ्टी भी सर पिछले साल ऐसे ही साइडवेज हो गया था जुलाई अगस्त सितंबर में Yes, बिल्कुल yes, ही। yes, yes, उसके बाद अक्टूबर में ठीक हो जाता है। yes. Normally मैंने भी देखा है, जितना मैंने ट्रेड किया है, this second quarter of a financial year is always good. Second quarter ending and third quarter starting, it's always good. वो पता नहीं क्यों होता है, probably वो नया अर्निंग्स का और मॉनसून का पता नहीं क्या होता है, बट इट्स ऑलवेज गुड. एक तो अपना फेस्टिव सीजन शुरू होता है सेकंड क्वार्टर एंडिंग एंड थर्ड क्वार्टर स्टार्टिंग, वो एक किकर है. तो फिर सर आपके हिसाब से वो तो रूल नहीं लगेगा जो वो कहते हैं कि अंडरलाइन एसेट होना चाहिए आपके साथ आपके पास? नहीं नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल. पर सर इन्होंने वो करेंसी मार्केट भी तो ऐसे ही खत्म किया है। करेंसी मार्केट आरबीआई ने खत्म किया है, सेबी ने नहीं. सेबी हाँ मार्केट ये खत्म भी नहीं है, कर सकता है. बस यही टेंशन हो रखी है, अगर ये बंद हो गया क्या करेंगे?
बिटकॉइन बिटकॉइन से अच्छा क्या होगा? बिटकॉइन कौन सा करने देते हैं? कल को कह दो, कल को कह देंगे भाई ये तो एनिमी की प्रॉपर्टी पे बनाया तुमने, पैसे हमने करने नहीं देंगे, हमें पकड़ाओ सारे पैसे, इनका क्या करेंगे? नहीं नहीं, करेंसी को एनिमी प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते ना। एनिमी प्रॉपर्टी इज ऑलवेज द फिजिकल एसेट। बिटकॉइन जैसे एसेट्स को एनिमी प्रॉपर्टी नहीं डिक्लेयर कर सकते। एंड द अदर थिंग इज बिटकॉइन इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी अथॉरिटी। हाँ ये तो है सर। चलो देखते हैं फिर, अगर निफ्टी ठीक हो गया फिर तो क्या चाहिए, बाकी नहीं बिटकॉइन पे जाएंगे नहीं, ही। निफ्टी ठीक होगा बट देन पहले जो आप देखते थे, एक कैंडल में 50-60 पॉइंट मूव देता था निफ्टी कभी कभी। बट हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो हमेशा कोई भी ट्रेड लेने के बाद वो एक डर लगा रहता है कि ये रिवर्स ना हो जाए। हम्म। What I have seen for the last 1-2 months is that only. Those big candles are missing. Very rarely they are coming. क्या किया था फिर सर आपने, ये पिछले लास्ट ट्रेडिंग डे पे कुछ किया था? फ्राइडे एक ट्रेड लिया था ये वाला ब्रेकडाउन पे, आई एग्जिटेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, फिर वापस यहाँ पे लेने की कोशिश की और रिवर्सल में स्टॉप लॉस ले गया, तो नेट नेट जीरो ही था। अच्छा। बट अभी शुरू ही हुआ है। आई मीन इफ यू सी दिस चार्ट, all the analysts were saying, like if you see this daily chart, I'll show one. All the so-called market experts were saying, ये वाला जो जोन था, all this zone, they were saying this is accumulation for a fresh breakout. But now, based on this price action, what I am thinking, this was distribution for a fresh breakdown. ये ब्रेकआउट दिया बकरा बनाने के लिए और लोगों से खरीदवाने के लिए। जब लोगों ने खरीद लिया तो अभी शायद फाइनल गिरावट आएगी। हाँ सबके मुंह से कहा है कि अब की बार तो 26,000 पार जाएंगे। हाँ वही। तो अभी सबको बिठा दिया तो आई थिंक हम लोग दोबारा ये लेवल्स पे आएंगे टेस्ट करने के लिए, 22,000 के आसपास। बट अभी नहीं, आराम आराम से। हाँ लेकिन वो तो सर, ये मेरा एक बड़ा दोस्त है, उसके पास 700 लोग है। वो बोल रहा है इतना खराब काम अभी मीन्स हमारा चल रहा है। तो वो हम्म, बोल रहा है कि बड़े कंपनी का तो कैसा होता रहेगा, हमारा तो मोनोपोली बिजनेस है। तो हम्म। उसके उस हिसाब से तो लग रहा है सर कि आईटी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे सर। आईटी तो श्योर सर वो खराब ही आना। ओनली sector where still it is expecting good results is finance, banks and finance. जिस दिन हाँ बैंक वो या तो है सर। फाइनेंस में से कोई एक खराब रिजल्ट देगा तो खत्म मार्केट। लेकिन ऐसे ऐसे देखो जरा, ये क्या बोल रहे हैं अभी, ठग गया ऐसा लग रहा है सर। हम्म ऐसे ऐसे बैंक, हम्म। वो बट अभी जो वो तो गया, वो तो लीडर है। वो तो गया तो फिर बैंक में कोई बचेगा, एक्सिस थोड़ा है तो। हम्म लेकिन नेक्स्ट शायद मेरे को लगता है सर, ये लोकल अपने जो सेक्टर्स है ना, हम्म, नेक्स्ट क्वार्टर से विल डू ओके। बारिश बारिश अच्छा गिरा। हाँ, FMCG will do good sir. Apart from FMCG, I don't see any other sector doing good. हमारा भी सर रियल एस्टेट का जो है ना, अभी हाँ बुकिंग बहुत स्लो गया है सर। हैदराबाद में, पुणे में। एक्चुअली जो हमारा ये 2-4 करोड़ वाला जो है ना, तो बहुत सप्लाई है। हाँ सर, और मेरा कितना जो खरीद, छोटा कितना प्रोजेक्ट चल रहा है, हाँ। कितना लोग के पास वैसा पैसा है सर, और कितने लोग खरीदेंगे, आप वो भी तो देखो। नहीं, वही सेक्टर बहुत आया है सर। अभी मेरा समझो, मेरा अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है वाकड़ में, वो 1 BHK का फ्लैट, इट्स अराउंड 35 to 40 lakhs, और हम्म 2 BHK 50 to 60 में। तो वो मेरा 8 दिन में सब बुकिंग हो गए सर। हाँ, वो तो और अफोर्डेबल जो, वाले सेगमेंट में आता है ना सर। अफोर्डेबल इज स्टिल हाँ ओके, अफोर्डेबल बट में हाई थोड़ा एंड वाला। है, लेकिन नहीं सर। उधर भी मेरा एक रो हाउस का प्रोजेक्ट चल रहा है, 10 रो हाउस है। हम्म उसमें बुकिंग नहीं है मैं तो एकदम बॉटम 1.5 CR पे दे रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है। हाँ, और टाउन में मेरा रीडेवलपमेंट का चल रहा है, उधर भी सर 3-4 करोड़ में फ्लैट जा रहे हैं सर। वो भी ओ वो बाप रे। स्टैंड बिल्डिंग में। तो रियल एस्टेट का भी इट इट मीन्स मीन्स रियल एस्टेट पे जितना भी डिपेंड है उनका भी शायद ऐसा हो सकता है सर। हम्म। सप्लाई भी ज्यादा है ना सर। हम्म। तो ये अभी 3-4 महीने का जो निफ्टी का स्कैल्पिंग का सर, क्या आप बोल रहे, करना है कि नहीं करना चाहिए?
तो ऐसे मार्केट में स्कैल्पिंग करके कोई फायदा नहीं. बेसिक रूल ऑफ स्कैल्पिंग इज यू विल हैव टू हैव ए वोलेटाइल मार्केट. ऐसा आराम आराम वाला मार्केट होगा तो स्कैल्पिंग में पैसा नहीं बनेगा. हाँ, नहीं बन रहा है. सर स्कैल्पिंग वाला तो एक बंदा मैं देख रहा था ट्विटर पे, वो 20 लाख से स्कैल्पिंग कर रहा था पिछले 2 हफ्तों से. उसने वो सपोर्ट पे खरीद लेता था, बस साला 10-15 पॉइंट बुक करता था, रेजिस्टेंस पे बेपुट खरीद लेता था, सपोर्ट पे कॉल खरीद लेता था. माँ भाई बड़ा बढ़िया काम कर रहा है, हर रोज 50,000 80,000 बन रहा है भाई को. हाँ, शुक्रवार को भाई ने अकाउंट ही डिलीट कर दिया. कितना बड़ा लॉस हो गया होगा. वही तो आई मीन वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कौन सा दिन क्या होने वाला है. अगर वो नहीं होगा और आप एक ही स्ट्रेटेजी में लगे रहोगे तो वैसे ही होने वाला है. शुक्रवार को कॉल रिवर्स ही नहीं हुई, भाई ने अकाउंट ही डिलीट कर दिया कि लोग सवाल पूछेंगे. तो बेसिक प्रीमाइस यही है हिमांशु की दिन कैसा रहने वाला है. जब तक आपकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर लो, आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे. हाँ सर. अभी निफ्टी इज एट अ वेरी इंटरेस्टिंग जोन. इट हैज टू इधर कम डाउन वेरी बैडली और गो अप वेरी बैडली. अभी अप वाले सिनेरियो में मुझे दिख नहीं रहा कि एकदम तोड़ फोड़ जाएगा ऊपर, बिकॉज हाँ स्ट्रक्चर सर, ठीक नहीं सारी है. दुनिया बुलिश बैठी है. हाँ, स्ट्रक्चर ठीक नहीं है ऊपर जाने के लिए. नीचे आने के लिए बढ़िया स्ट्रक्चर है क्योंकि इतने कंसोलिडेशन हुए हैं और हर सपोर्ट इतनी बार टेस्ट हुआ है. नेक्स्ट वेन एवर इट कम्स विद अ गुड सॉर्ट ऑफ मोमेंटम इट विल ब्रेक दो सपोर्ट्स इजीली. यही सपोर्ट देख लो 24,500 वाला, 1 2 3 4 5 बार हो गया है ऑलरेडी. अगली बार जब आएगा वो नहीं रहेगा, वो टूट जाएगा. Sir, in Bank Nifty 56,000 हम्म, price action हम्म. chart, it is looking like it's an parallel channel, like not a channel, it's stuck in the No, no, range. no, no. Bank Nifty 56,000 you are saying. Huh? Yes, yes. 56,000 spot or option you are saying? No, sir, options. 56,000 call or put? Call, huh? Oh, yes, sir. Yes, sir. Call. 56,000 call, Put Bank is like Nifty. falling, but call is like in the range. No, but once. It raises from 950 Ah, and it this is one you are reached saying. around 2,400. This one you are saying, right? Yes, yes, yes. But see, if you see, you are seeing this from 25th April. The same time, if you see Bank Nifty 25th April, it was like, where was this? 25th April. 25th April, it was close to 54,500. Now Bank Nifty is up by 2,200 points and call is still there only. So Okay. let's assume you bought call somewhere close to this date, 25th, and even at the end of 2.5 months, now you are seeing although Bank Nifty is up by 2,000 points, the call is still there. So what will be your reaction as and when the Bank Nifty will start falling? You will try to get out, right? No, sir. Just I'm asking like it is like in the same range. So whether it will again touch, retest, and No, it will not. Now if it comes to 1,000 zone, it will break and fall for sure. okay. So to clarify that only. Yeah. And again, like long term option chart patterns, you cannot depend on them. Intraday it is still fine because you will know whether it is decaying or whether someone is accumulating. But if you see option charts over like 2 or 3 months time frame, it will not give us any meaning. I mean, whether the market is going down, going up, whether it is call or put, all you will see is decay. If you see for 2 3 months, so option charts, if at all you want to follow only for intraday or like 1 2 days before that, not long term charts. No. सर आपका ये जो भी आप उसका आप भी शेयर कर, मीन्स कोई किसका कुछ क्वेश्चन नहीं है तो आप जितना थोड़ा थोड़ा शेयर कर सकते हो वैसा कर सकते हैं सर, वो बेटर रहेगा, थोड़ा सीख सकेंगे. सर मतलब समझा नहीं, शेयर मतलब कैसा बोल वही रहा जो भी आपका ये हूँ? नॉलेज है, ये जो आप ट्रेड करते हैं उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा कुछ बोल सकेंगे तो इट विल बी बेटर. लाइक बेस्ड ऑन डेली ट्रेड्स, और आप कैसे बोल रहे हो आप? व्हाट डेली और व्हाट यू आस्क? नहीं, आपको नॉलेज शेयरिंग कैसे चाहिए, मैं समझा नहीं. हर रोज मैं यही क्या जो ट्रेड ले रहा हूँ उसके नहीं नहीं, हिसाब ये से. ट्रेड ले सब बेसिक क्या ट्रेड लेना है और क्या दूसरा क्या ट्रेड लेने के मीन्स किधर कैसा ट्रेड लेना है, लेते हैं लेना है,
नहीं करना है, ये वो ऑप्शन का, कॉल पुट का, वॉट एवर योर एक्सपीरियंस यू कैन शेयर। थोड़ा थोड़ा मीन्स नॉट एवरी, थोड़ा आज, थोड़ा नेक्स्ट सैटरडे, थोड़ा ऐसे। ओके। तो सर मंडे के लिए तो जैसे मैंने बोला अभी नियर नेक्स्ट वीक we'll either have a very big candle or we'll trade in very small range again of 100 or 200 points. But मुझे जितना पता है और मैंने जितना देखा है नेक्स्ट वीक ऑल्सो विल हैव अ बिग कैंडल ऑन डाउन। तो मेरे जितने भी ट्रेड्स होंगे फॉर द नेक्स्ट वीक विल बी बेसिस दैट प्रीमाइस दैट मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन एग्रेसिवली। नाउ आई जस्ट नीड कंफर्मेशन ऑन 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स इफ माय अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट और नॉट। वंस आई हैव दैट कंफर्मेशन आई विल टेक ट्रेड्स। मेरा हमेशा वही लॉजिक होता है सर, मेरा कुछ बदलता नहीं है। जैसे अभी अगर आपने देख लिया तो Monday, if at all it goes above 25,200 and again comes into the range short, सिंपल 25,200 एक बार जाएगा वो सब शॉर्टर्स को हटाने के लिए जितने भी वीक शॉर्ट्स है वापस गिरे। या एक चीज मैं ये कर सकता हूँ कि वेन एवर आई ट्रेड लाइक वॉट एवर आई ट्रेड डेली एट द एंड ऑफ द डे probably I'll make a small picture saying what was my thought process for taking the trade and how I saw। वैसे ही शायद आप जान पाओ ओवर अ पीरियड ऑफ हाँ सर, ऐसे ठीक है। टाइम। तो इज दैट इट और किसी और को कुछ और डाउट्स? एनीबॉडी एल्स और शैल वी क्लोज इट हियर? सर एक अकाउंट का क्वेश्चन है। हम्म अभी ये जो अभी अपने अपन तो कैश में, मेरे समझा ब्रोकर के पास मेरा पैसा, मैंने मैक्सिमम अभी तक तो ऐसे ही मेरा कैश ही पड़ा रहता है। अभी हम्म तो मैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग या मीन्स आपके हिसाब से ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ थोड़ा। हम्म। तो ये फंड आप बोल रहे हैं लिक्विड फंड, या ये गिल्ट एफडी फंड। या क्या एग्जैक्टली करते हैं सर? एफडी नहीं कर सकते ना सर हम लोग, ब्रोकर लोग आजकल एफडी नहीं मानता है, तो मैं तो गिल्ट तो फंड क्या में क्या? गिल्ट फंड हाँ, पे गिल्ड गिल्ड में, और कितना उसका हेयर कट लेते हैं? 10% होता है। 10% है क्या? और हम्म। एम टू एम के लिए क्या करते हैं सर, जीरो का क्या करते हैं? एम टू एम मतलब है नहीं, लॉस हुआ आज, समझो 10 लाख का लॉस हो गया मेरा आज। लॉस हुआ तो जीरो तो आपको टाइम लेता है एक हफ्ते का कि फंड डाल दो। अगर एक हफ्ते में अगर अच्छा, आप फंड नहीं डाल पाओगे तो वो कोलेटरल को बेच के फंड ले लेता है। हाँ हाँ हाँ, 90% का देते हैं क्या हेयर कट? हम्म। और गिल्ड को कितना सर एवरेज मिलता है? तो वो डिपेंड करता है कि आरबीआई रेट कट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर रेट कट नहीं करता है तो आपका जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स है 6.5-7% वो मिलता है। अगर आपको हाँ, रेट कट कर रहा है आरबीआई जैसे पिछले 1-2 साल से कर रहा है तो 9.5-10% मिलता है। तो पिछले 2 साल से तो मेरे को 10% दिया है उसने। 10% दिया है। हम्म। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना सर, महीना दो दो महीने इतना बड़ा अमाउंट हाँ वही ब्रोकर ना के सर, पास पड़ा वही है। तो। हम्म तो मैं सोच रहा था कि क्या आप करते, मैंने कभी किया नहीं हो ऐसा। हम्म तो एक तो मेरा शेयर्स का वो, शायद वो एक है मार्जिन, और जो कैश है तो उसका मैं पूछ रहा था कि क्या। हम्म। 90% देते हैं, और M2M का हफ्ते के लिए दे गिव यू वन वन वीक, हम्म। एंड उसमें सेटल हुआ नहीं तो, नहीं तो कोलेटरल का जितना अमाउंट जो बेचना डेबिट है बेच उतना वो बेच। वो बेच देते। हम्म लेकिन फिर इतना कितने बार सिर्फ फिर वो सर उतना ट्रांजैक्शन होता है उसमें क्या? फिर पूरा आपका समझो 1 करोड़ का मेरा वो किया है मैंने गिल्ड फिट फंड, हम्म। 10 लाख का मेरा लॉस है, हम्म। तो 1 करोड़ का बेचना पड़ता है क्या? 10 लाख नहीं नहीं का नहीं, पार्टली बेच? पार्टली पार्टली पार्टली। पार्टली यू कैन डू दैट। हम्म। हेलो। हाँ या बाबू। हाँ सर, मैं बेसिकली ऑप्शन बाइंग ही कर रहा था, ओके तो मैं सेलिंग का सोच रहा हूँ। ओके। तो सर मतलब मैं सोच रहा था कि सर अब पहले स्टार्टिंग के मतलब आउट ऑफ द मनी से ही करूँ, और हेज मतलब कैसा लिया जाए? हाँ सर, आप अगर आप स्टार्टिंग अभी सेलिंग में आ रहे हो तो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट स्लाइटली आउट ऑफ द मनी। एंड हेज अगर आप लेना चाहते हो तो जो स्ट्राइक प्राइस आपने मेन सेल किया है स्लाइट आउट ऑफ मनी का, उससे 300-400 पॉइंट दूर सेल कर दोगे, बाई कर लोगे फॉर हेज इट इज ओके। तो मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाएगा और आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसे भी विक्स कम है अभी बहुत। हाँ मतलब 11-12 तो फिक्स है, इतना कम। हाँ तो अगर आप अभी 25,200 एट द मनी है, आपको समझ लीजिए आपको कॉल बेचना है क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है, तो आप 25,300 का बेच लो। 25,300 का बेच के 25,600 या 700 का हेज खरीद लो। तो हेज तो 11 ही रुपए का है सिर्फ। हाँ। एंड ट्वेंटी फाइव और थाउजेंड थ्री और हंड्रेड सर, 70 रुपए के आसपास का है।
और सर आप सेंसेक्स करते हैं? नहीं सर, नहीं, संचित नहीं। मतलब सेंसेक्स में बहुत मतलब स्पाइक बहुत ज्यादा आता है, वही इसीलिए प्रॉब्लम मैं है। सोच रहा। वही प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। एक बार उल्टा हो गया तो मत, वॉल्यूम भी नहीं होता है, मेरे वॉल्यूम को एग्जिट करने में तकलीफ हो जाएगी। हाँ हाँ, मतलब स्मॉल मतलब लॉट के लिए ठीक है ना? हाँ ठीक है। रिगार्डिंग। और सर आप स्टॉक में तो नहीं करते हैं? नहीं, स्टॉक सर बहुत रिसर्च के लिए बहुत टाइम लगता है, मेरा स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड ही है। ओके। और सर एक ये था कि सर मतलब जीरो था जो आप बोले कि 10 दिन मतलब एक हफ्ता टाइम देता है, तो उसमें सर इंटरेस्ट कुछ चार्ज करता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है। वो 18% के हिसाब से चार्ज करते हैं इंटरेस्ट, साल का ओके अठारह ओके परसेंट ओके। और सर आप सिर्फ जीरोधा यूज करते हैं, ब्रोकर ना और? हाँ सर, वो कॉर्पोरेट अकाउंट सिर्फ जीरो का ही देता है और कोई देता नहीं है। लफड़ा वही है। फायर सब स्टॉक्स मैंने ओके पूछा था, वो लोग कॉर्पोरेट अकाउंट नहीं देते। ओके सर, कॉर्पोरेट अकाउंट तो मतलब आपका। मतलब मेरा एक खुद का फर्म है, वो फर्म के नाम पे ये सब चलता है। ओके 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 ओके। ओ सिर्फ जीरोधा ही देता है और कोई नहीं देता? नहीं, बाकी सब रिटेल वाले ही है, अप स्टॉक्स फायर और सब। ओके ओके। हाँ, और एक बात सर, सर ये जो आप बिटकॉइन मतलब जो ये क्रिप्टो के बारे में कर रहे थे, तो सर कौन सा एक्सचेंज यूज करते हैं आप? डेल्टा एक्सचेंज सर, वही एक अपना रेगुलेटेड है, बाकी एक्सनेस ने तो अभी बंद किया न्यू रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो एंड एक्सनेस तो वो एफआईयू रजिस्टर्ड भी नहीं है बोलते सब लोग। मतलब वो वर्ल्ड वाइड लीडिंग ब्रोकर तो है, बट इंडिया में काफी उसका नेगेटिव फैला हुआ है। सर एक मतलब। क्वेश्चन है कि ये ओपन अपना अपन जो इंट्राडे कर रहे हैं हम्म, ऑप्शन सेलिंग, हम्म। उसको हेज सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए क्या प्रोटेक्शन के लिए भी सोचते हैं सर? हाँ नहीं सर, मेरा तो मार्जिन बेनिफिट के लिए है। ओके। और इंट्राडे में उसका प्रोटेक्शन कॉस्ट क्या क्या होगा था? सर? इंट्रा हाँ आपको वही बोलो। हेड से प्रोटेक्शन सेलिंग में आपको सिर्फ ओवरनाइट के लिए लेते हो आप, इंट्राडे में तो कोई फायदा नहीं। हाँ हाँ वही ना। और कॉस्टिंग कितना आता है सर उसका, कुछ निकाला अपने का? सर मतलब कॉस्टिंग हेज मतलब, का कॉस्टिंग, हेज 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 का कॉस्टिंग। हेज का मैंने जैसे बताया, ऑलवेज मेरा प्रीमियम हेज का 20 से 30 के बीच में रहता है, 20 to 30। नहीं नहीं नहीं, उसका कॉस्टिंग मीन्स अभी समझो अच्छा ओके, 100 रुपीज अगर का स्पॉट कॉस्ट। स्पॉट 20 पॉइंट पकड़ा आपने तो उसमें से हेज 2 पॉइंट लेके जाएगा। जो 2 पॉइंट में 10% हाँ, एवरेज। यस। ओके ओके। सर आप कितने पॉइंट का टारगेट रखते हैं वीक में या मंथ में? मंथली मेरा यूजुअली 100 का टारगेट रहता है, बट पूरे ऐसा मंथ नहीं का? है कि हाँ पूरे मंथ, बट ऐसा नहीं है कि वो पकड़ना ही पकड़ना है 100। कभी मिलता है, कभी मिलता नहीं है। 100 बहुत हो सर गया पंकज भाई, कंटिन्यूस अगर कितने 100, कितने 100 ट्रेड मैंने हो जाते? 100 मैंने अगर 100? महीने पकड़ लिया तो मेरा 100% डबल हो जाएगा हर साल अकाउंट, हाँ सेलिंग में भी। डबल। हाँ, 100 तो आपका पूरे फुल क्वांटिटी में ना? फुल क्वांटिटी। हम्म। सर ऐसा कंटिन्यूस ये लॉसेस या प्रॉफिट का कितना ट्रेड कंटिन्यूस ये हुआ है एक महीने में? कंटिन्यूअस मुश्किल से 4 या 5 दिन होगा सर मैक्स। 4 या 5 दिन लॉस में? प्रॉफिट में। प्रॉफिट में। और लॉस में सर? लॉस में कंटिन्यूअस मेरा 2 या 3 दिन ही होता है, उससे ज्यादा नहीं। बस उतना ही है? हाँ, ओके। और आजकल सर 1 मंथ में आप कितने ट्रेड ले रहे ऑलमोस्ट हो रहा है? अभी 8 to 9 ट्रेड्स अ मंथ। कितना 8-9 हो रहा है सर? हाँ मीन्स डायरेक्शनली आप मीन्स जो भी आपका ये दिख रहा है कि डायरेक्शनल है तो ही पकड़ तभी उस टाइम ही ले रहे थे ट्रेड? हाँ हाँ। क्योंकि मैंने एक लास्ट 10 10 10 ईयर्स का ये देखा है, तो हम्म। मंथ में सर 8 to 10 डेज डायरेक्शनल रहता है निफ्टी। चलो रहता था, मीन्स अभी पिछले 1 साल में कहाँ है, ऐसा तो है ही नहीं। हाँ पिछले नहीं, जो मैंने पहले किया था तो हाँ। 8-10 दिन का दिख रहा था जस्ट, मीन्स मूवमेंट ज्यादा 100 150 हम्म। पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट। हम्म। मीन्स उसमें से अभी 20-30 पॉइंट अपन 40 पॉइंट पकड़, तो मैं सोच रहा था कि 20 इंटू आप जैसा बोल रहे कि 10 में से समझो 4 लॉस में गए, हम्म। 6 में हो तो 100 पॉइंट महीने को मिला तो भी ठीक हुआ। ऐसा आई वाज जस्ट वो हाँ बैक हाँ। टेस्ट करके थिंकिंग में, हम्म। दिमाग में थिंकिंग।
बट अभी क्योंकि निफ्टी ने सताया है पिछले 2 महीने से, मेरे ख्याल से ये महीने अगला महीना अच्छा मूव देगा। हाँ ना, वो तो सर ये आपका वाइड स्क्रीन है क्या? इतना छोटा मतलब दिख रहा है। हाँ, वाइट स्क्रीन, वाइट स्क्रीन। हाँ हाँ, इसीलिए। ओके। In day format, is it forming any pattern? राइट नाउ नो पैटर्न। The only pattern that I saw in Nifty day was that Poland flag. It has broken that Poland flag upside wala. Right now it is pure bearish. Yum, sir. M, yes, but it is very steep M. I mean, if at all it would have tested 25,600 and fallen from there, then that would have been a very good M. But this is more or less Elliott wave sort of a pattern. Anybody here who knows Elliott waves? Elliott wave something is like this, like first wave, second wave, third, fourth, and fifth. Something like this is one Elliott wave, 5 legs. So we are already in the Ye- third leg. Third legs are usually the longest legs. So it will fall and again it will retrace. Little retracement. Where it will fall till, I think the first stop will be somewhere close to this level, 24,800. This was the swing from where buyers pushed it up very aggressively, 24,800 wala swing. So if at all it breaks 24,800, then good downside. There is nothing stopping it actually. Okay, then shall we close today's session? I'll upload this on YouTube also. I'll try uploading it tomorrow. If anybody wants to again visit this. Okay, chalo guys. Good evening. Good day. Bye Okay, bye. thank you, sir. thank you, Good night. sir. Bye. Bye. Bye, all. थैंक यू सर।